So, good evening, guys. We are back again in the continuation of the sessions and analyzing the annual report of the company in detail. So, in the previous session, we completed the foreign currency risk. So, all these currencies, like where it faced the profit or loss, all this have been mentioned against exports, imports, and this has been hedged as your derivatives contracts can be hedged, but shares can be hedged, commodities can be hedged. Similarly, your currencies can also be hedged. Okay. Then they have talked about the sensitivity analysis. So see, sensitivity analysis, there are two things. One is your like sensitivity analysis and one is your scenario analysis. So there is an absolute difference between the two, though the task of like both of them is the same. Okay. So what exactly is the difference between the two? In like sensitivity analysis, we're trying to input one variable at a time and trying to get a result. Like for example, अगर मान लो कि करेंसी है, ठीक है, उन्होंने दिया है दी इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ दी फॉरेन करेंसी लाइक दे हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन. अगर लाइक $1 अगर लाइक 75 रुपीज का हो गया, ठीक है, देन हमारी फिर ट्रेड पे क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, हो गया फर्स्ट केस. अगर $1 80 रुपीज हो गया, ठीक है, देन क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, $1 अगर 70 हो गया. So they are like trying to input like one variable at a time and they're like getting to know their like future obligations in like both the scenarios, चाहे वो डेटर हो चाहे क्रेडिटर हो. अगर डेटर होंगे उनको पैसा देना होगा तो वो होप करेंगे मतलब कि डॉलर गिर जाए. अगर डॉलर गिर जाएगा तो उन्हें फिर कम पैसे देने पड़ेंगे. अगर वो लेने वाले होंगे क्रेडिटर होंगे तो दिल होप कि डॉलर बढ़ जाए, and अगर डॉलर बढ़ गया तो इन रुपीज दिल गेट लाइक मोर अमाउंट, राइट. But like this was the scenario, like this is like when we talk about the sensitivity analysis, like putting input like one variable at a time. The second thing is talking about scenario analysis. Scenario analysis is same as sensitivity analysis, but the only difference is in sensitivity analysis you used to put one input at a time, but in scenario analysis you put like multiple inputs at a single time. मान लो कि $1 इज इक्वल टू एक हो गया, मतलब कि 75 इसकी वैल्यू हो गई. फिर तुमने इंटरेस्ट रेट का भी डाल दिया इम्पैक्ट. इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, तो करेंसी पर क्या पड़ेगा फर्क, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, मान लो अगर यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो यूएस बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, इंडिया के बॉन्ड्स की नहीं बढ़ेगी. यूएस के बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. तो पीपल विल स्टार्ट परचेजिंग द बॉन्ड्स ऑफ यूएस इन डॉलर. And up till certain time, up to a short term to medium term impact, right, the dollar would strengthen. मतलब कि strengthen रहेगा. एंड धीरे धीरे जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा एंड यील्ड नीचे हो जाएंगे. बट डॉलर स्ट्रांग ही रहने वाला है, डॉलर काफी हद तक स्ट्रांग रहेगा. अब उसको स्ट्रांग से मतलब कि नॉर्मल पे आने के लिए कहीं ओवर एप्रिशिएट भी ना हो जाए. सो एट दैट टाइम द गवर्नमेंट वुड बी लाइक accumulating more forex or selling bonds, मतलब की करेगी ताकि मतलब कि सेम रहे. so that's a different thing. but interest rate scenario एंड कोई मतलब कि मार्केट कंडीशंस भी इनपुट में डाल दी एंड सारा देखा इम्पैक्ट, एंड इन सब चीजों का इम्पैक्ट मिला के व्हाट वुड बी आवर फाइनल रेवेन्यू जो यहाँ पे आई हुई है, गेन हुआ है लॉस हुआ. So in sensitivity analysis, just one input was used at a single time, but in scenario analysis, like more than one input is used. Okay, that is one thing. Going further, 5% year. Then they have mentioned about the details of the derivative instruments, forward contracts, ये सब, कैश फ्लो hedges, जो डेरिवेटिव एसेट्स, डेरिवेटिव एसेट कब बन जाते हैं, ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा, थोड़ा फ्यूचर्स का थिंग है. अगर मान लो लाइक इफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लाइक टर्न इन फेवरेबल ऑफ यू, ठीक है, बिकॉज बेसिकली लाइक व्हाट हैपेंस इन स्टॉक मार्केट व्हेन वन पर्सन लूजेस द अदर गेन्स. एक ही जेब से पैसा निकल रहा है, ठीक है, जो लूज कर रहा है, एंड जो गेन कर रहा है तो उसकी जेब में पैसा आ रहा है. So same happens in future contract, but the amount that goes and comes in is huge. 10 times, 20 times, 100 गुना भी हो सकता है,
ठीक ठीक है, बिकॉज मार्जिन वार्जिन लेते हैं इसमें लोग। मतलब अगर आपके पास 10 रुपीज है तो यू कैन ट्रेड फॉर लाइक 1000 रुपीज और लाइक 1 लाख रुपीज, सो दैट इज मतलब 100 रुपए हैं, आपके 10 रुपीज हैं एंड 100 का ट्रेड करा तो 90 इज योर मार्जिन। ठीक है, तो अगर तुमको प्रॉफिट हो गया तो तुम्हें उसमें से अपना मार्जिन भी देना है ब्रोकर को। ठीक है, जो ब्रोकर ने बैंक से लेकर तुम्हें दिया। ठीक है, तो अगर तुम्हें गेन हो गया तो जिस की जेब से पैसा जा रहा है दैट पर्सन इज लाइबल टू गिव यू मनी, तो इट इज एन काइंड ऑफ एसेट फॉर यू। और अगर तुमको लॉस हो गया इट्स अ लाइबिलिटी फॉर यू, बिकॉज अब जेब से लाइक तुम्हारी पैसा जाएगा एंड तुमने सामने वाले को देना। एंड अगर मार्जिन लिया था फिर तो तुम्हें शायद पैसे देने के लिए भी और लोन लेना पड़े, या you'll have to sell your existing shares, वो बेच के पैसा। So that's a very bad condition. Gains and loss on comprehensive income or statement of P&L taxes. Capital management. They're like maintaining their capital by sound policy, sound dividend distribution policy. Internal accrual से मुझे एक चीज याद आई। In finance, like there is a theory called the pecking order theory. It's called your pecking order theory. This theory states that a company has 3 sources of finance. अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो 3 sources से the company can raise money. The first sources is your, and I'm telling you order wise, internal accruals. We also call it as your retained earnings. जो पैसा कंपनी के पास खुद का है। सेकेंड इज डेट एंड थर्ड इज इक्विटी। वाई internal accruals first, and this is on the basis of information. Or the sources that you have, because जो कंपनी के पास पैसा है that is the सबसे सस्ता सोर्स कि कंपनी अपने खुद के पैसे से the company can use for the projects of expansion or diversification or something else, right? अगर खुद का पैसा नहीं है, अब now you might wonder, instead of taking debt, like which increases the risk, the company must go for equity. No, because taking for debt, like when you take debt, you get tax deductibility of interest, tax shield मिलती है तुमको, and management में discipline आता है, and up to the level it is fine until your RE, that is the return on equity, is greater than the cost of debt. अगर cost of equity like should be greater than cost of debt, or your return on investment must be greater than cost of debt. जब तक ये दोनों कंडीशंस हैं तब तक डेट लो। एंड द थर्ड एंड लीस्ट सिनेरियो शुड बी इक्विटी, बिकॉज इक्विटी को रेज करने में पैसा लगता है। यू हैव टू गो फॉर IPOs और फॉलो अ पब्लिक ऑफर, से भी पूरा बहुत पेपर वर्क, एंड फिर लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बुलाओगे, देखिए लाइक दे विल बी लाइक वैल्यूइंग योर कंपनी एंड शेयर्स को प्राइस देके, तो उसमें मतलब बहुत खर्चा हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। बट व्हेन समवन सेज यू ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, when someone says you on the basis of cost of financing, then you'll have debt first, then internal accruals or retained earnings, and then equity. Why? Debt mein like you get the tax deductibility of interest and management has discipline. But why retained earnings second? Because in the first scenario we had on the basis of information, but cost of financing क्या है कि कितना खर्चा तुम्हारा हो सकता है। अब डेट में तो कम खर्चा है ही। Your retained earnings and equity, इसमें तुम्हारा हो गया your cost of retained earnings and this is your cost of equity. So these are almost the same and ज्यादा इनमें कुछ मतलब कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। The rate at which the company uses the retained earnings is almost the same the company uses the cost of equity. Almost the same, because like मतलब कि what exactly is equity? Like when you talk about equity, the company is using or making like more shares and floating in the market, right? The company is floating like more shares in the market. But जब वो retained earnings हैं जो कंपनी के पास existing हैं, ठीक है, तो वो भी तो अल्टीमेटली कंपनी किसी और को दे ही रही है, मतलब किसी और के हाथ में। अब वो प्रोजेक्ट
अच्छा नहीं निकला, तो देर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क, एंड द सेम रिस्क इज विद इक्विटी ओनली. दैट इज वाई कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग स्लाइटली कम होगा, बहुत स्लाइटली, बट ऑलमोस्ट सेम ही रहना. दैट इज वाई इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट फाइनेंसिंग के टर्म्स में डेट कम्स फर्स्ट, then retained earnings, and then equity. But in case of the basis of information, you have internal accruals, then debt, and then equity. ठीक है? That was a pecking order theory. It's not picking order theory, it's pecking. E है. ठीक है? Then the auditor's remuneration. कितना कितना पैसा like they have given to auditors. Okay, cost to auditors, remuneration, expenses, applicable taxes, then contingent liabilities and commitments. Then like what exactly is the difference between your contingent liabilities and capital commitments? Like both of them are liabilities, but the difference is contingent is based on like something to happen or not to happen. अगर हुआ तो पैसा तब देना है, अगर नहीं हुआ तो पैसा नहीं देना. But what happens in case of capital commitments? You have committed, चाहे हो या ना हो तुम पैसा दोगे, and that's your commitment. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में कमिटमेंट होती है एंड कंटिजेंट नहीं होता, बिकॉज दे आर फिक्स्ड इन नेचर, एंड आगे जाके तुमको रिटर्न इज एक्सपेक्टेड. रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, नहीं एक्सपेक्टेड. देन रिलेटेड पार्टी, दीज आर नॉट लाइक रिलेटेड पार्टी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है ये, पहली बात. ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज दिस. बिकॉज मतलब कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो मतलब लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है. अगर हुई होती, the auditors would have specifically mentioned in the auditor's report that we try to understand in the first sessions. ठीक है, नहीं हुआ ऐसा कुछ. These are just the usual transactions जो कंपनी की अपने लाइक सब्सिडरी के थ्रू होती है. होल्डिंग कंपनी ये है, देन ये सब्सिडरीज है. तो जो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं सब उसकी डिटेल्स हैं. All these are subsidiaries all over the world. Then the entity is controlled by key management personnel. The pyramidal gas, pyramidal. Executive directors कौन से यहाँ पे. All these like detailed intensive information is given. CFO कब बने थे? अशोक कुमार महिंद्रा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एंड ये भी होता है अगर मान लो लाइक इन दिस केस वी हैव नेस्ले, हो सकता है कि टाटा का कोई इंसान is in the board of Nestle. These inter-boards are possible, but that director cannot be in more than 15 companies. वो like 15 का लिमिट होता है as per the corporate law. Executive director. Employee benefit trust controls. यहाँ पे पैसा लगा, यहाँ पैसा लगा. Your nature of transactions. Holding companies, dividends के बारे में दिया हुआ है. Then fellow subsidiaries. All these subsidiaries have been mentioned. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से लिया. SA साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका. I have to see साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका. It will be like साउथ अमेरिका only. साउथ अफ्रीका में सिनेस्टो नहीं रहता. South America only, yeah. From there the company is getting money. And all these things. Expenses incurred अपने like subsidiaries, all the like detailed analysis has been given. The remuneration to key management personnel, contribution to employee trusts, कितना कितना पैसा कहाँ जा रहा है. All these things have been mentioned. इसमें लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते because these are basically the remuneration, but like if you want to know, because एक remuneration का rule है, it should not exceed 11% of the total profits of the company. तो अगर किसी को लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज देखने, देन यू कैन सी अगर लाइक 11% से ऊपर चला गया मतलब किसी भी एम्प्लॉय को, देखने वाली बात है. अदर ट्रांजैक्शन दे हैव मेंशन्ड हियर. की मैनेजरियल पर्सोनल, जो रेम्यूनरेशन बोनसेस जो भी दिए सब क्लियरली मेंशन्ड होगा. एंड अगर सब मिला के लाइक 11% से ज्यादा है तो इट इज समथिंग टू लुक अपॉन. Then
From note number 46, from segment reporting, will begin in